कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमाय। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Jai Sacinandana Gaura Hare. Jai Sacinandana Gaura Hare. Jai Gauranga 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 Gauranga. Nityananda 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 Nityananda. Nitai Gauranga Nitai Gauranga. Ai Nitai Gauranga Nitai Gauranga. Ai Jai Sacinandana Gaura Hare. Ai Gaura 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 Hare. Ai Gaura 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 Hare. Prabhupada Prabhupada Param Dayal Lila Prabhupada. Jaya Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Abhay Charan Aravinda Prabhupada. Bhakti Vedanta Swami. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari जय जय श्री श्री विश्वव्यापी प्रभुपाद गुरु पूजा की जय श्री श्री प्रभुपाद गुरु पूजा महामहोत्सव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन फौंडाचार्य भक्ति वेदांत जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय ब्रह्म गौरी माधवाचार्य गुरु परंपरा की जय वर्तमान इस्कॉन गुरु वर्ग आचार्य वर्ग वृंद की समवेत गौर भक्त जन की निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे नमो विष्णुपदाय। Who's playing rhythm?
little bit down. Down. Yeah. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamine Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha-shunyavadi Paschatya-deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare everyone. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Everyone together. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Shri Harinam Sankirtan Yagya ki Hare Krishna Mahamantra ki Srila Prabhupada ki Nitai Gaura Premanande Hari Hari Hare Krishna. So we'll, until Maharaj comes, we'll sing one Vaishnava bhajan. We'll sing Parama Karuna. Parama Karuna Gaudui Jana Nitai Gaura Chandra Parama Karuna Gaudui Jana Nitai Gaura Chandra Shabhavatara Shararishi Romani Kevala Nanda Kanda Kevala Nanda Kanda Kevala Ajoba Jobai Chaitanya Nitai Shudrida Vishwasha Kori
विषयाचार्या शेरसे मजिया मुके बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि परम करुणा औदु जना निताय गौरचंद्र परम करुणा पौदुई जना निताय गौरचंद्र रे बाय त्रिभुवने नाय हे मोने दयाल दाता पशु पक्षी चुरे पाशना विदरे शुनि जार गुण गाता शुनि जार गुण गाता परम करुणा पौदुई जना निताय गौरचंद्र परम करुणा पौदुई जना निताय गौरचंद्र संसारे मागिया रोहिणी पुरिया से पदे नाही ओ आशा
Shabhavatara Sarashiromani Shabhavatara Sarashiromani Kevalananda Kanda Kevalananda Kanda Kevalananda Kanda Kevalananda Kanda Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Oh Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Sai Gaura Premanande Hari Hari Bol. So we are very fortunate to have with us His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj is basically from UK, joined the International Society for Krishna Consciousness in 1975. Maharaj is a disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He's a sannyasi, initiating guru, at the moment with many, many devotees, disciples
in Damodar Desh too. Maharaj has been writing prolifically. Many titles of books that Maharaj has written, which includes Ramayana, and I will read out the list at the end, are also available at the book table for the benefit of everyone. Today and always, week after week, Maharaj speaks very wonderfully in Hindi, Bengali, as he has traveled extensively through Bengal, has lived in Bengal and Bangladesh for many years, reaching out every town and village, Srila Prabhupada's books. Maharaj is independently capable of giving a full lecture in Hindi, English, and Bengali. But today, we will have translations so that it will benefit everybody. How many of you do not understand Hindi? How many of you do not understand Hindi? Haath utaiye. How many of you do not understand Hindi? Okay. Anyway, for the benefit of a larger community, we will continue to have the English and the Hindi translation. Maharaj has also inspired in various parts of India and hopefully outside Varnashrama villages, Varnashrama community building. Maharaj has been part of visiting Damodar Desh from the early 90s. So we are talking of close to at least 26, 27 years of Maharaj is remembering what is the first year? 94, 95, I think. 92? Seems too early. 94, I think. 94, I think around somewhere from 94, Maharaj has been visiting us here. And that's 28 years time going by. We are all getting older. Maharaj is still preaching as a youth and getting younger and reaching out to younger hearts and people all around the world. We thank Maharaj for his presence here. As we need another few more minutes of setup, I wanted to say a few other things right now. Okay, so I would request everyone to switch off your mobile phones. Children, I want the children with the parents. I don't want to see any children out in the playground there. I'll definitely walk out to see if there are any children there. I want the children on the laps of the parents, sitting next to the parents, so that we have them total pin drop silence. We don't disturb the audience. We do have children classes. Enroll yourself. That will be better sometimes. But at the moment, we need to also make sure that we have a clear decorum here. As before Maharaj starts, I wanted to also mention that I'm coming back from a tour of Uttar Pradesh. Except for Vrindavan, I have never visited Ayodhya, Varanasi, Prayag, Patna, Kanpur, Lucknow. It was just so wonderful to see a huge community of devotees developing in each one of these places, centers in every one of these places. बहुत बार हम जब आश्रम में प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग आप पूछे होंगे कि गोरखपुर में यात्रा है प्रभु, गोरखपुर में कुछ टेम्पल है. कभी नहीं था, अभी है, सभी जगह में है. Ayodhya, Gorakhpur, at least centers, land purchased for centers in the future. But then आप सबके लिए एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि जरूर बहुत लोग इधर से टूर जा रहे हैं वही एरिया में जुलाई में, परंतु एक बात से मुझे बहुत गर्व हुआ. हम सबको गर्व होना है. ये क्या है? नेपाल से टेम्पल प्रेसिडेंट आए थे और पटना के टेम्पल प्रेसिडेंट और लखनऊ या सभी जगह के टेम्पल प्रेसिडेंट आके मुझे एक बात बोले
कि मिडिल ईस्ट जीसीसी से जो भक्त आ जाते हैं वापस, वो ग्राम ग्राम में मंदिर खोल रहे हैं अभी। हमारे हरे कृष्णा के आंदोलन बहुत बार सिटीज और टाउन्स में, बड़े बड़े शहर में हो जाती है, पर ग्राम ग्राम में पहुंचती है। कैसे पहुंचती है मालूम है? आप सबके कारण। आप सब जब इधर दामोदर देश या इधर जीसीसी में सभी गांव गांव से आ जाते हैं। यूपी बोले, कितने लोग यूपी से हैं? हाथ उठाइए। आप एटलीस्ट 20 गांव से हैं, आपके गांव में कभी मंदिर नहीं हुआ होगा। आप इधर रेडी होके कृष्ण भावनामृत में पक्का होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, कीर्तन कैसे करें, कैसे पकाएं, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स कैसे बांटें, ये सब सीख के जब वापस आप अपने घर गांव जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का नाम है 5G प्रोग्राम है। क्या है? ग्राम ग्राम में क्या है? गुरु, गीता, गंगा, गौरंगा और गाय। ये 5G प्रोग्राम, बहुत से टेंपल प्रेसिडेंट्स मुझे आके प्रशंसा किए कि ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कि खुल रहा है और आपके भक्त आके इधर हमें प्रचार करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। So I think we need to invest a lot more together in all the GCCs and not just the villages. And I think all of you are all from different cities, even the Grahastas. So I think there's a lot that we can do here that can impact India and the whole world. Let us wonderfully have the opportunity. Dubai, I would say Damodar Desh is an amazing place in one way to have at least 50 or 60 sannyasis. We are post-COVID. This is the first time Maharaj is visiting here in almost 3 years, if I remember correct. Though Maharaj has visited us on Zoom. But the floodgates have opened up, and I'm sure we're going to have week after week. I'm not worried about Sindhi Hall not being there for me, because this hall is bigger, better, and we can do a lot more together. सब साथ हैं, पता नहीं कितने साल के लिए हैं हम सब, पर एक तो जरूर ग्रहण करना है। वो क्या है? हम कृष्ण भावनामृत कैसे इधर ढूंढ ढूंढ के ले लें। So I would request every one of you not to miss a single Sunday program. Be there. See every week how you progress in Krishna consciousness. Take advantage of every sannyasi, every senior devotee who is visiting us here. Learn. Join Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. Learn to do arti. Learn to do kirtans. Go back home to your villages. We'll still be connected and support in whatever way possible. The temples will support in whatever way possible. But let's really fulfill Srila Prabhupada's desire for reaching it into every town and village. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. Hari Hari. You will translate in Hindi, is it? Okay. So, you'll need to get the Bhagavad Gita Yatha Rup. I'm going to read from Bhagavad Gita as it is, yeah. Oh, you have it. Do you have it there in Hindi? I have a Hindi version. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा। Chapter 3, text 34. अध्याय 3, श्लोक संख्या 34। In yen arthe raga dveshau vyavasthitau tayor navashama gacchit tauhyasya paripantinau. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. हिंदी में अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। I believe it's in Brihadaranyaka Upanishad. Maybe it's Chandogya. I always get mixed up between the two. In which it's stated that some rishis came for instruction to one Raja. And the Raja, they're Kshatriya, they're Brahmanas, so he set them above him. Then they asked him to teach him one kind of vidya, which he knew and they didn't know. He said, no, I can't teach you. The next day they came back and they sat below him because they realized to learn something, you have to sit below. So I'm just wondering about this sitting above the speaker. How is that going to work? Because knowledge, like water, flows down. हिंदी में It's the modern auditorium idea. Everyone sits above the speaker. But the Vedic system is you have to stand under or sit under in order to understand. Can I? Saral Hindi mein niche बैठना पड़ेगा. जिससे ज्ञान का आदान प्रदान अच्छी तरह हो जाएगा. Okay. Can I? सारांश translate किया था आधुनिक हिंदी. Essence translate kiya. Hindi's easy. So? I read the All right. Then the purport. Those who, I'll read the whole purport. I will read. I'll read the whole purport. Okay. Or maybe you can just read it, because everyone understands Hindi, is it not? Okay. Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification, but those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties.
According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationships with any women other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationships with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the path of self-realization. As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident even on the royal roads. Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time, owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But attachment to Krishna consciousness, or acting always in the loving service of Krishna, detaches one from all kinds of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्र तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं का यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे।
समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। श्रील प्रभुपाद की जय। Take the book. Or phone off करना, अपने अपने मोबाइल को आप साइलेंट पे या स्विच ऑफ कर सकते हैं अभी। Throughout Bhagavad Gita, and especially in the early chapters, there's a lot of discussion about sense control. पूरी भगवत गीता में विशेषकर प्रारंभ के अध्यायों में इंद्रिय नियंत्रण के ऊपर काफी चर्चा हुई है। This is necessary for spiritual advancement. आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। This is necessary even to live as a human being in human society. एक मनुष्य की भांति मनुष्य समाज में रहने के लिए भी ये अति आवश्यक है। There has to be some level of self-control. आत्मनियंत्रण के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए कुछ स्तर तक। For instance, we may be feeling hungry and we're walking past stalls with food, and we may think, well, I'll just take it and eat it. But you can't just take it and eat it. You have to pay for it and eat it. There are rules to follow. उदाहरण के तौर पे अगर हम बहुत भूखे हैं और रास्ते में जा रहे हैं और किसी खाद्य पदार्थ की दुकानों के पास, तो वहाँ पे हम कुछ भी उठाकर खा सकते हैं, पर नहीं, हमारे समाज में इसके ऊपर भी कोई नियम बना हुआ है। हम ऐसे लेकर के नहीं, हमको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। Srila Prabhupada in this purport has mentioned the sexual inclination of the conditioned soul. श्रील प्रभुपाद ने अपने इस तात्पर्य में यौन संबंध के बारे में चर्चा की है। In every civilization all over the world, there are complex rules and mores, which means not a legal rule, but social conventions for regulating sexual contact. तो दुनिया के सभी सभ्यताओं में हम देखते हैं कि यौन संबंध के ऊपर, यौन सुख के ऊपर नियंत्रण रखने के कानून या छोटे छोटे मॉरल कंडक्ट्स जो हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं। The modern society thinks itself to be very advanced because they are relaxing so many rules and even encouraging much of which would traditionally in most societies throughout the world be called immoral. तो आधुनिक समाज में ये सोचते कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम पहले जो नियम फॉलो किए जाते थे या इंद्रिय कंट्रोल के, उसके ऊपर कुछ छूट दी जाती है, ये उससे ये सिद्ध करते हैं कि हम आगे की ओर प्रगति कर रहे हैं उल्टी दिशा में। But actually it's being more like animals. पर वास्तव में ये एक पशु जीवन जैसा है। In animal society, in some species there is monogamy, but there's no wedding ceremony. There's no vivaha sanskara. तो पशु समाज में विवाह ऐसा कुछ होता नहीं है, परंतु वहाँ भी कुछ नियम होते हैं उनके। In all civilized societies, traditionally, marriage has been understood as a religious function. तो जितने भी सभ्यताएं हैं उसमें देखा जाता है कि विवाह का जो संस्कार है वो एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। It is executed in accord with higher rules
rules coming from a higher platform than there's simply the animal function of attraction between male and female. ये कोर्ट में जा करके ये विवाह संपन्न किया जाता है, वहाँ पे भी कुछ कानून के दायरे में रहकर. The Vedic culture, which aims at liberation from material existence, also has rules for regulating sense enjoyment. तो ये हमारी वैदिक प्रणाली है जहाँ पे कुछ यम नियम बने हुए हैं, वहाँ भी ये हमको आगे प्रगति करने के लिए इसके ऊपर नियंत्रण का संशोधन है. Which means the sexual inclination, the inclination to eat, the inclination to, or the need to urinate and defecate, all these things are to be done under rules and regulations. देखते हैं कि इवन खाने पीने के मामले में, चाहे यौन सुख के मामले में, या इवन हम जाकर के जो मूत्र विसर्जन वगैरह करते हैं तो उसमें भी कुछ नियम बने होते हैं. But the Vedic culture is unique in that it aims at liberation from sensual desire. मगर जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसका लक्ष्य होता है कि हम इन सब बातों से मुक्त हो सके, उसी ओर हमको नियंत्रण में डाला जाता है. Not simply one level is to control the desire, but another level is to become completely free from the desire. एक स्तर होता है कि हम अपनी इन इच्छाओं को हम प्रतिपादित करें और दूसरा होता है हम इससे मुक्त हो जाएं. With the understanding that desire binds us to the cycle of repeated birth and death. बट जो इच्छाएं हैं हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से बांध कर रखती हैं. Of course, there are prominent religious cultures in the world that they don't even understand that there is a cycle of repeated birth and death. Please sit down. Please come down. As a Maryada ke anusar, Maryada रखने के लिए. महाराज ने कह दिया है आप सब लोग नीचे जितना आप हो सके बैठे. जल जैसे ज्ञान ऊपर से नीचे जाता है, वो कारण है. So, did you translate what I just said? Could you please repeat, Maharaj, what you said, the last sentence? I was saying that the Vedic culture is unique in having the idea to become free completely from sensual enjoyment, because that awards freedom from repeated birth and death, the cycle of repeated birth. But there are prominent religious cultures in the world that don't even have this basic knowledge that there is repeated birth and death. तो हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार इन सब के ऊपर नियंत्रण करने का उद्देश्य होता है कि हम इससे मुक्ति प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसे बहुत से तथाकथित हैं जो जिनको मालूम ही नहीं है कि ये गलत है या इसके करने से हमारी प्रगति रुक जाती है, या रिपीटेड बर्थ एंड डेथ जो है वो होता है, पुनर्जन्म वगैरह. The appetite for sense enjoyment is so strong that even many or most of the followers of Vedic culture, even though they know there is repeated birth and death, they simply desire to enjoy in this material world. तो ये इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है कि जो लोग जानते भी हैं कि हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये नहीं होना चाहिए, फिर भी वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं. They desire to follow Vedic rituals for going to the heavenly planets, which is criticized by Krishna strongly in the early part of Bhagavad Gita. तो
वो केवल वैदिक जो भी हमारे वेद सम्मत जो रिचुअल्स हैं या रीति रिवाज हैं उसका वो अनुमोदन इसलिए करते हैं कि ताकि हम स्वर्ग के लोकों तक अब जा कर के वास कर सके, और जो कि कृष्ण ने भगवद गीता के प्रारंभ से ही उसकी भर्त्सना की है। Krishna consciousness is the ultimate Vedic path. तो कृष्ण भावना मृत जो है वैदिक पद्धति का सबसे सर्वोत्तम पाथ है, which awards not only liberation, but beyond that, the full satisfaction of the soul. जो कि केवल हमें मुक्ति प्रदान नहीं करता है, परंतु आत्मा की पूर्ण शांति, आत्मा की संतुष्टि प्रदान करता है। Savai pung sang paro dharmo yato bhaktir adhokshaje ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. The supreme occupation for humanity is devotional, unmotivated, uninterrupted devotional service unto the transcendent Lord, and only such unmotivated, uninterrupted devotional service to the transcendental Lord can fully satisfy the self. तो महाराज ने जो भी भागवतम का श्लोक बताया है, परो धर्मो, कि वो धर्म जिससे भगवान जो हमारे जो धर्म है, हमारे जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे शास्त्र अनुमोदित जो हमारे कर्म हैं, वो लक्षित होते हैं हमको पूरी तरह प्रसन्नता देने के लिए और उत्तम गति प्राप्त करवाने के लिए। भगवान की ओर भक्ति। You can explain it a little bit more, this verse. भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए और पूर्ण प्रसन्नता आत्मा को सुप्रसिद्धति। Krishna consciousness is a very powerful process to overcome mundane sensual attraction. कृष्ण भावना मृत बहुत शक्तिशाली विधि है हमारे इंद्रिय भोग के ऊपर हम नियंत्रण लाने के लिए। Because it doesn't simply deny the demands of the senses, but it fulfills the demands of the senses in a much better way than is possible with the attitude of simply enjoying the senses in a mundane way. तो कृष्ण भावना अमृत में हमारे इंद्रिय भोग के ऊपर प्रतिबंध न लगाते हुए हमें और अच्छी तरह से इंद्रिय सुख प्राप्त करवाता है और जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी हो। Therefore, what is that verse? Vishaya विनिवर्तन vinivartante niraharasya dehinaha raso varjang rasopyasya parang drishtva nivartate. One may try to restrain the senses from their objects. Niraha, don't feed them, starve them. Don't engage in sense enjoyment. But the taste for sense enjoyment still remains. But by engaging the senses in a way that fully satisfies the senses, which means in contact with Krishna, one gets a higher taste and one doesn't fall into gross sense gratification. तो भगवद गीता के श्लोक में बताया गया है कि निराहार सिद्धहीन, हम अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए उसको हम इंद्रिय तृप्ति से हम दूर रख सकते हैं, परंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो बनी रहती है। परंतु कृष्ण भावना में एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ उससे भी ऊंचा एक स्वाद हमें मिलता है, क्या, जिससे हमको और ज़्यादा आत्म आनंद मिलता है। It's a very simple principle to understand. ये एक साधारण सिद्धांत है समझने के लिए।
At the lowest level, at animal level or subhuman level, one sees the food in the bazaar and he just takes it. तो जो नीचे के स्तर के जो सुख है वो हम कुछ इंद्रियों से अनुभव करते हैं, देखते हैं और उठा के उसको खाते हैं पशु की तरह. Just like we see in the bazaar in India, the cow is coming to steal the vegetables and the fruit, and it has to be chased away with a stick. And sometimes when the merchant is not looking, the cow manages to sneak a banana or two. तो हम ऐसे बाजार में देखते हैं कि ये गाय आती है और वहाँ सब्जी बेचने वाला है, तो वहाँ से आकर वो सब्जी चुरा करके ऐसे ले जाती है खींच करके. तो अगर दुकानदार ने देख लिया तो उसको लाठी से भगाता है या उसको दंडित करता है. कभी कभी वो न देख पाता है तो वो लेके निकलने में सफल हो जाती है. But these civilized human purchases the vegetables and fruits and so on. लेकिन जो सभ्य मनुष्य है वो जाता है दुकान पे, उसकी कीमत चुकाता है, उसका मोल चुका करके वो खरीदता है. And takes them home and cooks and enjoys nice food. घर ले जाता है, उसको पकाता है और उस खाद्य पदार्थ को भोग करता है. So that is civilized. तो ये सिविलाइज सभ्यता है हमारी. But that binds one in material existence. मगर ये हमें भौतिक जीवन से बांध देता है. But the devotee of Krishna takes the vegetables, fruits, takes home, cooks, offers it to Krishna, and then takes the food. लेकिन जो भक्त होता है वो जाता है, मोल चुका के खरीदता है और आकर के पका करके भगवान को भोग धराता है, उसको खिलाता है, उसके बाद स्वयं उसका उपभोग करता है. Instead of thinking what I like to eat, he thinks what Krishna wants to eat. तो बजाय कि मैं क्या खाना चाहता हूँ वो देखता है कृष्णा क्या पसंद करते हैं वो लाता है. In one's family home, then one has to cook according to the needs of the family, but that should be offered to Krishna first. तो एक घर गृहस्थी में हम सामान लाते हैं कि अपने घर वालों की पसंद के हिसाब से, मगर वो भी हमें पहले कृष्ण को अर्पित करना चाहिए. In the established temples, the cooking is what Krishna wants. It's not what we want and we offer to Krishna, but only what Krishna wants. परंतु जो मंदिर होते हैं वहाँ पे जो रसोई बनता है वो वहाँ के पकाने वालों के हिसाब से नहीं, कृष्ण को क्या पसंद है उसके हिसाब से रसोई बनाई जाती है. So in this way, if we have the vow to not take any food except that which is offered by devotees in love to Krishna, then we experience a higher taste. तो अगर हम भी ये संकल्प दे दें कि ले लेते हैं कि हम जो कुछ भी भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया जाए खाद्य पदार्थ वही हम सेवन करेंगे, इसके सिवाय हम कुछ नहीं, तो इसमें हमें एक ऊंचा स्वाद मिलेगा. I can give an example from my own life. महाराज अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण दे सकते हैं. That in the 1970s in England, I really liked prasadam. 1970 की शतक में महाराज को प्रसाद बहुत पसंद आता था. I wasn't the only one. महाराज अकेले ऐसे नहीं थे. And I was thinking, what's next? What's the next meal? It's so good. और वो सोचते थे इसके बाद और क्या आने वाला है. But then I thought, this is not good thinking like this. फिर महाराज ने सोचा ऐसा सोचना तो ठीक नहीं है. I'm not supposed to be the enjoyer. Krishna's the enjoyer. मैं भोक्ता नहीं हूँ, कृष्णा भोक्ता है. So then I took up cooking as a service. तो महाराज ने रसोई बनाने की सेवा ले ली. Means cooking for Krishna. कृष्ण And naturally for the devotees also. कृष्ण के लिए और उनके भक्तों के लिए रसोई बनाने की सेवा. And it worked. My meditation changed from
how I will enjoy nice food to how I have to cook in a way that will be pleasing for Krishna and the devotees. तो इससे चेतना में सुधार आया कि जो पहले मेरे को क्या अच्छा लगता है, अब ये बदल गया, अब कृष्ण को क्या पसंद है और उनके भक्तों को क्या अच्छा लगेगा वो बनाने लगा. So in the same way, all the senses can be purified by engagement in Krishna's service, doing everything for Krishna's pleasure. तो इसी प्रकार हम अपने प्रत्येक इंद्रियों को हम इन कृष्ण की सेवा में इस प्रकार लगा सकते हैं. We like to dress very fashionably. You can dress Radha and Krishna very fashionably. आपको अच्छी तरह श्रृंगार वस्त्र पहनने का शौक है तो आप राधा और कृष्ण का श्रृंगार कीजिए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए. Nice scents. Arabia, one of the traditional products of Arabia is nice scents. S-C-E-N-T-S. हाँ, तो यहाँ का एक उत्पादन है अरेबिया का, मिडल ईस्ट का, वो सेंट अत्तर जो मिलता है. Then you can offer that to Krishna and enjoy the nice smell. How nicely Krishna has enjoyed. The meditation changes to how nicely I am enjoying to how nicely Krishna has enjoyed. तो वो इतर आप लेकर के कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, फिर आप अपने हाथों में लगा करके फिर आप ध्यान लगा सकते हैं कि कृष्ण ने कैसे इसको एंजॉय भोगा होगा. The sexual attraction, how do you do that? How do you engage that in Krishna's service? तो ये यौन सुख है, ये हम कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं? That is engaged by producing children and engaging them in the service of Krishna. वो इस प्रकार हो सकता है कि हम अपने यौन सुख से हम कृष्ण भावना भावित बच्चों का उत्पादन करें, उनको पैदा करें और भगवान की सेवा में लगाएं उनको. It can be difficult to overcome that attraction. इस प्रकार के आकर्षण से विरक्त होना बहुत मुश्किल हो सकता है. Not it can be, it is. It is, ये है, हो नहीं सकता बल्कि है. Yeah, I'm correcting myself, what I said. Yeah. As I've heard from many devotees in the Grihastha ashram, especially when they're newly married, these are mostly Western devotees, because in Indian culture you don't speak about these things too much. But they've told me that, especially for the first few years, it can be very, very difficult to overcome that attraction and follow the rules strictly. तो महाराज बोलते हैं ऐसे बहुत गृहस्थ भक्तों से मिलने के बाद, खास करके पाश्चात्य देश के भक्तों के साथ मिल करके जो गृहस्थ हैं उनसे पता चलता है जो खास करके जिनकी नई नई शादी होती है, क्या नए जो उनके लिए बहुत एक कठिनाई होती है उनको कि इसके ऊपर हम नियंत्रण ला सकें यौन संबंध यौन सुख के. Another way to attempt to overcome that attraction, which is particularly open for those who are in male bodies, is not to marry at all and not to... Stop shining that light in my face, please. And not to engage in sex at all. तो जो पुरुष हैं उनके लिए तो फिर भी एक रास्ता है कि हम इस जीवन में, गृहस्थ जीवन में हम जाए ही नहीं, हम विवाह ना करें और इससे बचे रहें. Srila Prabhupada describes that one path, the Grihastha life, that's safe in the sense that one is much less likely to, well, the sexual attraction has an outlet and then one is not likely to fall into the gross sinful indulgence in sex life. उसमें भी नियंत्रण होता है, वो उस जीवन में प्रवेश नहीं करते परंतु वो प्रवृत्ति बनी रहती है. Is that what you said, Maharaj? No, I'm saying that
in the grihastha life it's safe in as much as one has an outlet for that sex desire, which is approved by Shastra. It's dharmic, and that can be engaged in Krishna's service by producing children. तो गृहस्थ जीवन में ये है कि भाई इसके लिए हमें छूट है, हमारे पास जो इसकी प्रवृत्ति है क्या उसके लिए प्रबंध है, और उस प्रबंध से फिर हम कृष्ण भावना में बच्चे को पैदा कर सकते हैं. But to renounce life, that means that one is free from many distractions and attachments. लेकिन इससे गृहस्थ जीवन से दूर रहने का मतलब बहुत से दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर जो उससे हम बचे रहते हैं. So that should be anukul, conducive for spiritual advancement if one can properly follow that. तो इससे ये जो है अनुकूल है हमारी भक्ति में की प्रगति के लिए, अगर हम इसका पालन कर सके. In either grihastha life or renounced life, there are rules to follow. चाहे वो संन्यास जीवन हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, नियम होते हैं कुछ पालन करने के लिए. Indriyasyarthe, this verse we're reading today, raga dvesho vyavastito tayo navashamaga chit tohyasya paripantino. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion, 334, because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Rag or dvesh. जैसे हमने अनुवाद में पढ़ा था, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं. मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं. In the renounced life, one has to be very strict. जो संन्यास का जीवन है उसमें बहुत ही कठोर नियम होते हैं. Renounced life means brahmacharya, vanaprastha, and sannyas. There are three ashrams in which sexual contact is not allowed. महाराज मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, मैं संन्यास बोल रहा था, लेकिन इस प्रकार महाराज कहना चाहते हैं कि इसमें तीन प्रकार के जो आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तीनों में ये जो त्याग वाला जीवन है, बाकी एक ही आश्रम है जिसमें हमको अलाउड है. One has to be very strict in following. लेकिन व्यक्ति को चाहिए इसको गंभीरता से, स्ट्रिक्टली, कठोरता से पालन करना चाहिए. In grihastha life there is a license for sense gratification. तो गृहस्थ जीवन में एक अनुमति होती है हमें इंद्रिय तृप्ति को भोगने की. License means it's allowed under certain terms and conditions. अनुमति का मतलब होता है कि कुछ यम नियम के अंतर्गत That's why उसको करने की छूट. इस प्रसंग में लाइसेंस कहना चाहिए. लाइसेंस, क्योंकि अनुमति शब्द or license, anumati gives the idea of just do whatever you damn well like, but license means no, it has to be renewed, it has to be checked. मैं You have सटीक शब्द to renew it again and again, it has to be checked and seen. लाइसेंस एंड हिंदी. लाइसेंस लगता है कोई ठीक शब्द नहीं है हिंदी में. हिंदी में सब लाइसेंस बोलते हैं. यहाँ भी लाइसेंस ही लिखा है. देखें ऐसा बोल. अनुज्ञापक एक शब्द है. अनुज्ञापक बोलने से क्या समझते लोग? अगर अनुज्ञापक कौन सी भाषा बोलते हैं, वो उसका मतलब क्या है? लाइसेंस
अंग्रेजी में शब्द लाइसेंस जो है, हिंदी में लाइसेंस वही है. Anyway, लाइसेंस शब्द सब समझते हैं. that's why Hindi is called the Prakrita Bhasha. Sanskrita Bhasha means you can't do things like that. But Hindi, these Prakrita Bhasha means you can, it's Sanskrit and everything else all mixed up. तो हिंदी प्राकृतिक भाषा है, मतलब संस्कृत में जब सब कुछ नहीं कर सकते, महाराज से जैसे ही बोल रहे थे राइट, लेकिन हिंदी में सब आ जाता है. संस्कृत में अनुज्ञापक कहना पड़ेगा. संस्कृत में अनुज्ञापक करना पड़ेगा. Like that. So, it's expected that those who are in renounced life, they are called vairagis. The word is vairagi. They're expected to follow very strictly. वैरागी माने बहुत कठोरता से उसका पालन करने वाला. However, sometimes it is seen that even those who are following very strictly have an accident. परंतु देखा जाता है जो बहुत कठोरता से नियमों का पालन करते हैं वो भी उनके जीवन में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब दुर्घटनाएं होती हैं. I gave him a license. दुर्घटनाएं. महाराज ये लाइसेंस का अच्छा शब्द है यहाँ पे. दुर्घटना. हाँ? एक्सीडेंट. दुर्घटना. नहीं, लाइसेंस शब्द पे मैं आया हूँ, तो अनुज्ञा पत्र उसको भी समझ. Anyway, the example given here in Srila Prabhupada's purport is that even on the royal road there can be accidents. तो प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया है कि जो राजमार्ग होता है, जो बिल्कुल सुरक्षित माना है, वहाँ पे भी दुर्घटनाएं होती है. There can be a first class road constructed in such a way that it's constructed in such a way to try to avoid accidents, still there are accidents. तो एकदम फर्स्ट पहले दर्जे का जो होता है रास्ता होता है, मार्ग होता है बड़ा, वहाँ पे कोई संभावना नहीं होती है, सब कुछ वहाँ पे प्रबंध होता है, एक्सीडेंट ना हो, फिर भी वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना. Now we'll talk a little bit about road construction. Do we have any civil engineers here? Road builders? रोड कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर्स यहाँ कोई हैं? सिविल इंजीनियर्स, ये our quantity surveyor. You build roads, design roads. Okay. In England, there is a road called Watling Street, which is the A1, previously the main marg, the main road from London to North England. लंदन? North England. लंदन से उत्तर इंग्लैंड की ओर जाने वाला जो एक बहुत बड़ा रास्ता है, उस रास्ते का नाम महाराज ने बताया, मैं सुन नहीं पाया. Watling Street, it doesn't matter. It was built first of all by the Romans. It's going back a long time. बहुत पुराना मार्ग है, रोमन्स जो होते थे उन्होंने बनवाया था वो. It's completely straight. बिल्कुल सीधा है रास्ता. Later the M1 was built also, in which the road it goes from London to North England. It's deliberately built, not straight, curving. उसके बाद एक M1 रास्ता बना है जो लंदन से उत्तर इंग्लैंड की ओर जाता है, लेकिन वो it's an alternative road. Vikalp rasta. Anyway, you know Hindi. तो उसी रास्ते के लिए एक दूसरा रास्ता भी बनाया गया, ऑल्टरनेटिव रोड, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वो जानबूझ के ऐसा बनाया गया कि वो सीधा ना हो और वो घूमता घूमता जाए. Because when you're driving on that road, there's no, it's just driving, there's no buffaloes coming in or any, there's no, it's made in such a way it avoids the cities. It's very boring and people tend to fall asleep and then there's an accident.
तो वो जो पहले वाला रास्ता जो सीधा है वो उसमें कोई खतरा नहीं जैसे माना जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल जब चलते रहेंगे एक ही दिशा में, एक ही स्पीड में, एक ही गति में आप जा रहे हैं, तो उसमें निद्रा आने की संभावना होती है कि कुछ करने के लिए होता नहीं है वहाँ पे, कोई रास्ते में गाय भैंस या कुछ भी नहीं, तो खतरा उसमें ज़्यादा होता दुर्घटना होने का। So every, you might know, 2 miles or so, there's a curve in the road, which means the driver has to be alert. That's the idea. The curve in the road is put to help to keep the drivers alert. जाए तो ये दूसरा रास्ता जो बनाया है जिसमें वो सर्प की भांति जैसे घूमता फिरता है, तो उसमें जो ड्राइवर है, चालक है गाड़ी, उसको सतर्क रहना पड़ता है, जागृत रहना पड़ता है उसको संभाल के चलाने के लिए। So it's built with the idea of safety. तो वो सुरक्षा को ध्यान में रख करके उसको बनाया गया है। So there are no accidents. That's the idea. ताकि दुर्घटनाएं न हो। And there are many rules you have to follow. Many rules. बहुत से नियम पालन करने पड़ते हैं। Speed limits. तो गति के ऊपर भी कंट्रोल। There are also you have to have a license to drive a vehicle. तो अनुज्ञा पत्र लाइसेंस होना चाहिए वहाँ पे उस गाड़ी चलाने के लिए। And your vehicle has to be tested every year to see that it's road safe. और आपकी गाड़ी को भी एक प्रशिक्षण में के थ्रू जाना पड़ता है ताकि वो उस रास्ते में चलने योग्य है कि नहीं। There are many precautions, but still there are accidents. इतनी ज़्यादा उसमें प्रिकॉशंस माने कि सुरक्षा के ये हैं नियम, फिर भी वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है। Sometimes accidents come because people don't follow the rules. That's a very common cause. They exceed the speed limit. कभी-कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि लोग नियम को फॉलो नहीं करते, और वो जैसे कि जो गति की सीमा है उसको पार करके जाते हैं। If you don't follow the basic rules, you're likely to get in an accident. तो अगर आप जो मूल जो सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, नियम है, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। So the same thing in spiritual life or married religious life. If you don't follow the rules, you're going to get in trouble. तो उसी प्रकार महाराज कह रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन या विवाहित जीवन में अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ भी दुर्घटना होने की संभावना है। There are specific rules which are given by law, and there are conventions which you are expected to follow. तो विशेष नियम बनाए जाते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। Just like there are rules, speed limit. Don't drive after drinking. Those are rules given by law. तो कानून की तरफ से एक नियम होता है कि आप मदिरा पान करने के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। There are other things which you're just expected to follow, just like don't drive when you're sleepy. और दूसरे नियम होते हैं जो हम वो आशा रखते हैं सब ड्राइवर से, चालक से फॉलो कर, जैसे कि आप जब निद्रा में हो, निद्रा आ रही हो तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। Be careful with that GPS. Don't be looking at that when you're driving. You have to look at it when you're driving, but if you put too much attention on it, then your attention will be away from the road. तो अब रास्ता छोड़ के इधर उधर ध्यान अपना न भटकाएं, ये भी एक नियम है। So apart from the rules to regulate sensual attraction, there are rules that it used to be a rule of law, and it probably still is in this country, that you're not allowed by law to engage in sexual activity. A man is not allowed to engage in sexual activity with another man's wife. That's a law. ऐसा रूल है कि आप अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ यौन संबंध नहीं रख सकते।
Then there are social conventions, such as you don't start laughing and joking with someone else's wife. कुछ सामाजिक प्रतिबंध होते हैं कि हम सबसे बातें घुल मिल करके नहीं कर सकते समाज में. परस्त्री से विशेषकर. पर स्त्रियां दूसरी पराई स्त्रियों से. If you don't follow, you're going to get in trouble. अगर इसका अनुसरण नहीं करेंगे तो आप कष्ट में पड़ सकते हैं. And all the more so for those who are in the renounced order of life, or those who are vairagis. और विशेष करके जो त्यागमय जीवन बिता रहे हैं उनके लिए तो और ज्यादा. In the present age, there are more challenges. Internet. और आजकल तो और ज्यादा चुनौतियां हैं इंटरनेट के माध्यम से. Very dangerous. Can be very dangerous. बहुत खतरनाक है. It can be that one is an experienced driver, but due to just one moment of carelessness, and you end up in some terrible accident. You may have been driving for 30 years, very experienced, follow all the rules. One moment of carelessness, there's an accident. You're in trouble. तो आपने देखा होगा कि आप बहुत ही अच्छे चालक हैं गाड़ी के, इतने सालों से चला रहे हैं और सब नियमों का पालन करते हुए कभी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन कभी भी एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आपका ध्यान भटकेगा तो Or you may think, I've been driving for 30 years, never had any problem, so I don't need to follow the rules so strictly. मैं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, सब नियमों का पालन कर रहा हूँ, आज तक कोई दुर्घटना हुई नहीं है, तो मैं को अभी नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है. So you can see the same thing in, we're talking about how that relates to sense gratification. तो अब वही चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी हम इतने सालों से. Now it might be that someone is a good driver, they're an experienced driver, they're following all the rules, still they get in an accident. वही बात हो गई कि आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे चालक हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको तजुर्बा है, फिर भी एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो सकती है. I just saw a sign as I was walking back from the Abra this morning that watch out for other drivers also, because their mistakes could cause you an accident. तो महाराज आज अबरा से लौट रहे थे तो उन्हें एक विज्ञापन देखा, लिखा था भाई आप दूसरे जो चालक हैं उनसे सावधान रहें, वो गलतियां कर सकते हैं. It's a very dangerous world. खतरनाक रास्ता है. And sometimes it can be that just apparently without any fault of the driver himself gets into an accident. कभी ऐसा भी होता है कि जो चालक अपनी गाड़ी चला रहा है उसने कोई गलती नहीं की है, सब नियमों का पालन कर रहा है, फिर भी दुर्घटना हो जाती है. Suddenly you're driving along, everything, suddenly this happens quite often actually. A dog or something runs in the road, you try and avoid the dog, and then you hit a person and you save the dog's life and kill a human's life. That can happen also. It's in a split second, you don't have time to think, well, let me kill the dog and you don't see the human that you're just about to kill. कभी ऐसा भी देखा कि आप बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं और रास्ते में कोई कुत्ता है या कोई भी पशु है, तो आप उसको बचाने के लिए अपनी गाड़ी को आप घुमा करके कभी हो सकता है किसी मनुष्य के ऊपर चढ़ा दे गाड़ी. So that can be in spiritual life also. We don't have a bad intention, but somehow or other we do something and it results in, we do something with the best of intentions, but somehow or other it all just seems to go wrong. तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होता है, हमारे अंदर कुछ गलत विचार न हो, फिर भी हम कुछ अच्छा करने के लिए जाएं और वो उल्टा हो जाए. The example is given here of accidents on the roads. यहाँ पे जो उदाहरण रास्ते के ऊपर दुर्घटनाओं का जो है, But the example is extrapolated to controlling the mind and senses.
ये अपने मन को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का है. A car is quite complex, but driving a car is quite simple in relation compared to controlling the mind, which is extremely complex. तो गाड़ी चलाना एक जटिल विषय है, मगर फिर भी मन को चलाना, मन को नियंत्रण में करना वो और ज़्यादा जटिल है उसके मुकाबले. In driving, we should try to avoid distractions. जो गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस, उपदेश होते हैं. Distractions. गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हमारे ध्यान भटकने के चांसेस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस. But the mind is 24 hours processing different distractions. लेकिन जो मेरा मन है वो 24 घंटे इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस, जो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, वो प्रोसेस चल रहा है उसका अंदर. Sometimes it happens that someone who is practicing Krishna consciousness very seriously, you see distraction? Just see. Thank you very much. देखिए ये डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने Such वाली. important subject matter we're talking about, but the child has come and immediately everyone distracted, attention distracted. कोई विशेष बातें चल रही हों और अचानक कोई ध्यान भटकाने के लिए सामने आए. Yeah, exactly right. There's no plan for a distraction, but it came up now by Krishna is arranging. महाराज बोले कृष्ण का ये Ishvara sarva bhutanam hrideshe junatishati. Brahmayan, I'm making them wonder. I make them wonder. So he made him wonder in there. Yes, sometimes it happens that someone who's been practicing Krishna consciousness for many years, very seriously, has a serious accident. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई बहुत सालों से गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन कर रहा है, क्या फिर भी वो बहुत ही खतरनाक दुर्घटना में फंस जाता है. You don't see it so much among Indian devotees. It's more common among Western devotees. ये पाश्चात्य देश के भक्तों में ज्यादा पाया जाता है. We have a very bad upbringing and a very bad culture. तो हमारा जो पालन हुआ है वो पाश्चात्य देश की बात कर रहे हैं महाराज, वो सही नहीं है. But India today also, whatever you get in the West, you get in India, because it's all right there, right in your pocket. All the distractions of the world. In your smartphone or iPhone. Very bad. I don't know, but I know about it. Very bad things are there. तो स्मार्टफोन के माध्यम से बहुत ही गलत बातें आज इंडिया में भी उपलब्ध हैं, जो बाहर देखने को मिलते हैं वो वहाँ भी सरलता से. Srila Prabhupada is often quoted as saying, regarding Krishna consciousness, don't be surprised who leaves, be surprised who stays. Don't be surprised if anyone leaves, be surprised if anyone stays. तो कोई हमें छोड़ के चला जाता है उसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, कौन नहीं छोड़ के गया वो आश्चर्य की बात है. Because it was a common thing with Srila Prabhupada's disciples, who are mostly from the Western countries, that they would take to Krishna consciousness and then just go away. Mrityu sangsara vartmane. ना बस जो कृष्ण भावनामृत में आते हैं फिर वो चले जाते हैं. Being Indian doesn't stop Maya. You might have noticed. If you didn't notice, you're in Maya. If you think you're okay, you're in trouble.
हिंदुस्तानी या भारतीय होने से माया रुक नहीं जाएगी. But it is a fact that because Krishna consciousness is it's the culture of the Bharata Bhumi, that you can relate to it much better than people who are born in a different culture. तो कृष्ण भावनामृत जो हमारे भारतीय समाज में तो कॉमन है, बहुत आम है, परंतु अगर हम दूसरों से बच कर रहे हैं. And also, generally speaking, those who are born in India means they're, especially in a Hindu family, means they have some piety from previous life, which is causing them to be born in that situation. जो खास करके जो हिंदू परिवार में हैं, क्या उनके पास कुछ पुण्य कर्म होते हैं या जिसकी वजह से वो कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं. But it happens. There are fall downs. पर ऐसा होता है, वो भी गिर जाते हैं. There's a saying in English, if someone goes on a wrong path, there but for the grace of God go I. In other words, it could be me also. We can condemn someone, but are we so great that we can say, I will never fall in Maya? तो हम दूसरों को देखकर उनकी निंदा कर सकते हैं और ऐसा लगेगा कि मैं कभी माया में गिर नहीं सकता, ऐसा होता है. I remember many years ago hearing one devotee say, now I'm completely beyond Maya. I thought, he's in trouble. He was in trouble. He didn't last much longer, actually. ऐसा आया था कि एक भक्त बोलने लगा, अब मैं बिल्कुल माया को पार कर चुका हूँ. क्या हमारे वो सबसे ज़्यादा खतरे में है. The great gift of Krishna consciousness is that Krishna accepts his devotee. The great gift of Krishna consciousness is that Krishna accepts his devotee. जो सबसे बड़ा उपहार है कृष्ण भावनामृत का कि कृष्ण हमको भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं. Swabhamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. If one practices this dharma, even a little, it can save one from the greatest fear. स्वल्पमस्य धर्म से माने थोड़ी सी भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कोई करता है तो उसे बड़े से बड़े खतरे से बचा सकता है. I was just discussing this topic this morning with Nanda Kumar Prabhu. आज सुबह नंद कुमार प्रभु के साथ चर्चा हो रही थी. We both have appreciation of Ram Leela, Ramayana. राम लीला और रामायण के ऊपर कुछ बातें चल रही थी. And he was pointing out that at the time of Rama's wedding, नंद कुमार प्रभु ने बताया कि भगवान रामचंद्र के विवाह के समय that it was the guru of the guru at that, well, it was the guru of in Dasharatha's court, Vashisht. He recited the names of all the great kings in that dynasty, all the forebears of Sri Rama. तो वशिष्ठ मुनि जो दशरथ के वहाँ पे गुरु थे, उन्होंने उस समय जितने भी उनके पूर्वज हैं उन सब का नाम बताया. There are many famous names in that बहुत ही dynasty. विख्यात नाम थे उसमें. But some of them are famous, you could say infamous. Infamous, kukyati, apayash. कुख्याति की वजह से कुछ लोग ख्याति ज़्यादा फेमस थे, मतलब भगवान महाराज कह रहे. Pointing out some of the names. Thank you, Nanda Kumar, for bringing this to my attention. Trishanku. त्रिशंकु. Yeah, in Hindi, Trishanku. Same.
now the Hindu culture has changed, but until recently, if someone is neither here nor there, you'd say, Trishanku avastame, Trishanku jaise avastame. He's there, just like Trishanku, means he's neither here, he's neither there, he's stuck somewhere in the middle. तो आज उस नाम से उदाहरण देते कि कोई व्यक्ति की परिस्थिति देखकर ये त्रिशंकु अवस्था में है, न इधर है न उधर है. He was cursed, he was a great Raja, but he was cursed to become a Chandala. By Vashishta, same Vashishta. तो वशिष्ठ ने वो राजा था, उसको श्राप मिला था तो चंडाल बनने, वो चंडाल बन गया. Then we have Asamanjas, who was really, you know what Asamanjas means? It means not quite right. Something wrong there. Things like throwing children in the river and drowning them, that's pretty asamanjas, isn't it? एक और नाम बताया असमंजस्य ना, वो बिल्कुल सही काम नहीं करने वाला, बच्चों को नदी में फेंकना. Pravrid, who became Kalmashapad, a Rakshasa. He was cursed to become a Rakshasa. कामशपथ राक्षस, जिसको अभिशाप मिला था राक्षस बनने का. Nahush became a snake. Nahush. वो बीमार हो गया. स्नेक, सर्प बन गया वो. Again by a curse. वो भी अभिशाप के कारण. And in the dynasty is also given the name of Yayati. ययाति, who really got into a lot of domestic problems as related in Bhagavatam and Ramayana and Mahabharata. वो घरेलू समस्याओं में पड़ गया था, जैसे भागवतम में सब में बताया जाता है. Who himself in Bhagavatam compares himself to a lusty goat for his sexual attraction to his wife. He was telling his own wife this. तो उसकी तुलना की ये कामुक बकरे की तरह जो अपनी पत्नी से आसक्त हो गया था. So all these names were recited with all respect. तो ये सब नाम उस समय बोले गए थे आदर के साथ. Why? क्यों? Someone is so bad he's cursed to become a Chandal? And you're respecting him? जिसको चंडाल बनने के लिए अभिशाप मिला था, उसको इतना सम्मान. Because they reformed, they came back to the right path. वो वापस आ गए अब सही अवस्था में. Specifically, it's stated in Bhagavatam, Yayati and Devayani, they both agreed, yeah, we've just been living like goats. ययाति देवयानी के विषय बताया गया है कि उन्होंने एहसास किया कि हम पशु की भांति जी रहे थे, कुत्तों की भांति. So let's worship Krishna. They worshiped Krishna and they went back to Godhead. तो अब हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, उनके मन में आया तो उन्होंने कृष्ण भक्ति की और वो घर वापस गए. So we need not be too harsh on those who fall. Too harsh on those who fall. Harsh English word. तो हमें जिनका पतन हो जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हमको कठोर नहीं होना चाहिए या निंदक नहीं बनना चाहिए. There's another saying in English. अंग्रेजी में कहावत है That every saint has a past. हर संत का एक अतीत होता है. मतलब they weren't always a saint. वो हमेशा संत नहीं थे. They may have been very bad in the past. हो सकता है वो अतीत में बहुत बुरे रहे हों. Ramayana. Who has written the Ramayana? He's a dacoit, a thief, a murderer. Is he? He was. रामायण किसने रचना की थी? रामायण की एक डाकू था. So every saint has a past. तो हर एक संत का एक अतीत होता है. What's the next line?
every sinner has a future. हाँ, तो हर संत का एक भविष्य होता है. अरे सिनर, ओके. तो उसी प्रकार से हर पापी का भी एक भविष्य होता है. There's always hope for everyone. तो सबके लिए एक आशा है. That doesn't mean that sinning is good. It's not good. इसका मतलब ये नहीं कि पाप अच्छा है, पाप करना अच्छा नहीं है. But we should remember that Krishna comes to this world, it's a world of sinners, to uplift us. तो कृष्ण आते हैं इन पापियों का उद्धार करने के लिए, उठाने के लिए. Well, what does Krishna say about this? कृष्ण कहाँ बोलते हैं ये इसके बारे में? Paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam. He comes to uplift the sadhus and destroy the rascals, demons. तो हम साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ. But when he destroys the demons, he doesn't completely destroy them. He gives there's always another chance. There's always तो another जब दुष्टों का नाश करते हैं वो पूरी तरह से उसका नाश नहीं करते, उनको दोबारा मौका देते हैं. That was one reason that Krishna Consciousness appealed to me very much more than the Christianity I was raised in. तो यही एक बात है जो महाराज को कृष्ण भावना अमृत की ओर आकर्षित कर गई. That, did you translate it all? Okay. So, because in Christianity they say you have one chance, you get it wrong, you're in hell forever. तो वही क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि एक बार आपने गलती की तो आपका कोई चांस नहीं आगे बढ़ने का. But the Vedic or correct understanding is that God is not so cruel. लेकिन जो वैदिक हमारे वैदिक समझ है कि भगवान इतने क्रूर नहीं है. That whatever we do, however bad it may be, will be punished, but there's always another chance. हमने जितने भी बुरे कर्म किए हो, कुछ भी किया हो, क्या हमें उसका दंड मिलेगा, परंतु हमें एक मौका भी मिलता है. And especially in this Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu has come. He doesn't kill any demons, otherwise there'd be no one left practically. तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ, उन्होंने असुरों का नाश नहीं किया, विनाश नहीं किया. मैं तो यहाँ पे कोई नहीं बचता. He destroys the demoniac mentality by spreading the chanting of the holy names. तो उन्होंने आसुरिक जो मानसिकता है उसका नाश किया, क्यों? पवित्र नाम के वितरण से. Particularly, विशेषकर, what's the next line? particularly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is that a good way to finish a class? All right, we'll finish the class now. तो यहाँ पे वाणी को विराम, क्लास शेष करते हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't clap. You do something. You like? You thought it was a nice class. You're clapping. All right. You please do one thing. You forgive all my offenses. That's all. Don't clap. Be merciful. Do I translate this? Can if you like. All right. Any questions? Kuch prashno ho Maharaj? You have a few minutes for questions. Yeah, I guess so. Actually, we have the youth class at 5:30 this evening, and then after that we're going to have, because there were some questions last night, but we're going to have a Prashnotari after that. So, isn't that what we decided? Yeah. There are many, it's a small audience, this is a monthly.
Okay, but if you're really serious, you can make it over to the Align building. I don't have much space there. Hmm? I don't have much space there. Okay, you can go on questions, but But yeah, okay, all right. You keep a check on it. 2 or 3 questions. Will Okay. quick fire, rapid fire questions. And Maharaj, I'm not going to let you go without one kirtan from you. Okay. I'm having problems with. Before I was having problems with my legs, so I can't dance. So I dance with my hands, and now I have a problem with my hands. So now what do I do? No, you're going to sing. Keho na. What is that? Keho na che mane mane narada muni bhaja. Some just they can only dance in their mind. Okay, quick. I'm just going to have 2 or 3 questions. If you have your hands up with your remote, reach out to me. किसी को प्रश्न है? As he's reaching out on behalf of Untitled Chapter, we would like to make a small contribution as usual to Maharaj. Hare Krishna, Dandot. Jai. Yeah. Whenever Maharaj- I come to this country, whatever money is given by me, there's one thief who takes it. There he is standing at the back. All right, I'll give it to you later. I give it to him, I can't blame him. Hare Krishna, Dandot Pranam Maharaj. Banglai. नहीं, हिंदी। Bangla Ucharan, Sri Roko. महाराज जी जैसे हम तो हिंदी। मतलब जुड़े हैं ये अपना इंटरनेशनल कृष्ण भावना अमृत से 5 साल हो गया। हरि नाम जप भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? परिवर्तन हो गया, पहले आप हरि कीर्तन नहीं किया था। वो फिर परिवर्तन है नहीं? और भी परिवर्तन होने चाहिए। धन्यवाद। Really rapid fire. कितना महान है हरि नाम। असंख्य जन्मों के पश्चात हम अवसर मिल गया हरि नाम कीर्तन करना। कितना महान है वो अवसर, कितना महान है जो भक्ति करते हैं। Krishna Prabhuji, Dandavata Pranam. Hare Krishna, that's the answer. What's the question? मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपका मुखार बिंदु से 2 मिनट गौर कथा सुनना चाहता हूँ बांग्ला में, बंगाली में। लेकिन आप हिंदी कहते हैं। क्या भूल गया मातृभाषा? আমি আপনার কাছে 2 মিনিট ঘোর কথা শুনने के लिए শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। 2 মিনিট বাংলায়। বাংলায় সবচেয়ে महत्वपूर्ण शब्द की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. See, I said it. I can speak Hindi, Telugu, Russian, all of it. Like Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. And in Chinese, Hare Krishna 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 Hare 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 Lama 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 Hare Hare. আর একটা বাঙালি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু আপনার শ্রীচরণে। মহারাজ, আচ্ছা আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল এমন যে আমাদের সাথে যে দীক্ষা নিলাম আমি, দীক্ষা নিলাম আমি, নিব এখন নিই নাই, গুরুর সাথে আমাদের একটি স্পিরিচুয়াল অ্যাটাচমেন্ট আছে, গুরুর সাথে আধ্যাত্মিক একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে। আমি কিভাবে ফিল করব যে ওনার সাথে আমার একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে? কারণ আমি যখন দীক্ষা নিচ্ছি তখনই ওনার সাথে শিষ্য সম্বন্ধ কিভাবে স্থাপিত হয়, তার মূল কি? গুরু মানে শিক্ষক, তার কাছ থেকে আমাদের শুনতে হবে, শ্রবণের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থাপিত করা হয় এবং যা আমরা শুনি তা আমরা পালন করি। সেটা
গুরু শিষ্য সম্বন্ধে মূল কথা। তো যা আমরা শুনি তা আমরা পালন করি, সেভাবে সেই সম্বন্ধ স্থাপিত না, হয়। আমার কথা এমন ছিল যে ওনার সাথে আমার যে একটা স্পিরিচুয়াল অ্যাটাচমেন্ট আছে, সেইটি সেটা আমি কিভাবে বুঝতে পারবো? যে আমি তো ওনাকে একবারে দেখলাম, ওনার সাথে একবারে হরিমন্ত্র নিলাম, কিন্তু আমি শুনতে কিভাবে হবে, বুঝতে পারবো যে দেখা সেটা কিছু না, অনুভব করবো কিভাবে? শুনতে হবে। শ্রবণ করা এবং সেবা করা থেকে অনুভব আসবে, বিশ্বাস করো। এখন পর্যন্ত যদি অনুভব হয়নি, বিশ্বাস করতে হবে, আসবে। Hare Krishna Maharaj, pranams. Maharaj, I had a question. एक प्रश्न था, अभी आपने जैसे बताया कि जब हम रॉयल रोड्स पे चलते हैं तो जैसे हम एक कुत्ते को बचाने के लिए हमने एक इंसान को गलती से मार दिया, तो जैसे कुत्ते को बचाने के लिए कभी मनुष्य के ऊपर गाड़ी चला देते हैं रॉयल रोड के ऊपर। एक That's the उदाहरण example दिया which था। was given, Maharaj. So how do we understand? Because in life also we don't intend to make we हाँ, try to ऐसा do बोला some. था कि how do you say, unintentionally. Yes. So how do we consider? How do we interpret those sins and how do we overcome them? अकस्मात अनजाने में So yes. So ऐसा अगर हो, भगवान जो सबके अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं हमारा उद्देश्य, भगवान माफ करेंगे, फिर भी उससे बहुत तकलीफ हो सकते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सब कुछ जो होते हैं हमारे जीवन में, चाहे अच्छा हो या खराब हो, समझना चाहिए कि सब भगवान की कृपा है। इसका माध्यम से भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए भगवान ऐसी परिस्थिति व्यवस्था की। खराब जैसे देखते हैं, परंतु समझना चाहिए कि सब भगवान की इच्छा है। भगवान किस लिए ऐसी परिस्थिति व्यवस्था की मुझे मालूम नहीं, परंतु विश्वास है कि भगवान ऐसे किया जिससे उससे मेरा कल्याण होगा। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, as you explained, there are accidents on the royal roads also. So, as we know, there are accidents on the royal road. Still, we don't want to get out of that royal road. We are still attached to that royal road. The royal road is good. The royal road means, in the example, it means the bhakti marg. We should go on the royal road. He's not saying we shouldn't go on the royal road, but as long as we're in this material world, just like on the road, however well it's built, there will be accidents. So on the bhakti marg, what is that? What is that? Koti Kantaka Ruddha. I just don't remember the whole thing. Do you remember? Do you remember that verse, Chaitanya Chandramrita? Koti Kantaka Ruddha. Sri Bhakti Marga Eha Koti Kantaka Ruddha. It particularly means in this Kali Yuga, but exactly the word is given, Bhakti Marga, the road of bhakti. In this Kali Yuga, there are millions of thorns. So there will be troubles.
Maharaj, just one question. Maharaj, after the accident happens, what is the prayaschitta? How do we get back on the road, Maharaj? What is the First thing solution? is we try to avoid the accident. It's not that everyone has some kind of hitch or glitch, but most people don't have serious accidents. But some people do, and you never know who it will be. No one walks out of their house in the morning and thinks, I'm going to have a serious accident today. But every day there are so many people who have a serious accident. So the first thing is we try to avoid. If it happens, what do? What is the prayaschitta? In Krishna Consciousness, the prayaschitta is just go on with what you're doing. There is no prayaschitta per se. We may adjust, just like we may have to adjust the steering wheel, or we may take a break from driving fast cars or something. Some adjustment may be needed to be made, but the basic thing is we have to go on with the faith that Krishna Bharadayamai. Krishna is very merciful. Devotees should also be merciful. But we shouldn't make an excuse to repeatedly sin. That's something different. मैं हिंदी में हिंदी में प्रयास करूं अनुवाद अभी प्रभु ने मैं संक्षेप में बता था प्रभु ने प्रश्न पूछा ये रॉयल Actually, I spoke in Hindi and Bengali. You didn't translate it back to English, so let's go on. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, one question. You mentioned that Srila Prabhupada said if somebody goes out, don't be surprised. But if somebody is staying, you should be surprised. When people go out, can we say it is because of their past karmas that they're not able to stay in bhakti? My doubt is that if there are various reasons one goes out. One thing is making offenses. That's something different. That's a major cause of fall down. Making offenses. That's something different altogether. Yeah, after the accident there may be analysis of it. I was once on a flight somewhere in America and the person next to me told me his job is to go to the site of plane accidents and analyze how it happened so as to avoid future ones happening. But he has a job. It means it doesn't stop happening. Even though he analyzes it, it still goes on. I was just reading in this Shooting Rhinos with the Swami book, Volume 3, Shyamasundar Prabhu, that Srila Prabhupada was talking with Graham Hill, who I knew the name in my childhood. He was a famous British racing driver. And they were talking about how dangerous it is to drive and fast cars, and Srila Prabhupada was using this analogy. And he eventually died in an accident. What kind of accident? A plane accident. He was driving the plane and he was trying to land in the fog because he had his own private plane. I'll give another example. I don't know how much we're going to get from this, but General Patton is a famous figure, you know? You're nodding your head. He believed in reincarnation. Maybe that's why you believe it, why you've heard the name, because it's mentioned maybe in that Coming Back book, which is a great book. Distribute it, read it. Very important book, Coming Back. So, General Patton was the commander of the combined army. He was an American general. He was put in charge of all the forces in Western Europe, the Allies pushing back the Nazi forces. So he was a very big figure in military history. He was out there on the battlefields, D-Day, and then the Battle of the Bulge and all this kind of thing. He survived it all. Shortly after the war, he died in a car crash. So you just don't know. Keshava tua jagat vichitra. It's a strange world.
Kadam kadam yad vipadam natesham. Padam padam yad vipadam natesham. There's danger at every step. But samashritaye padda pallava plavang mahatpadang punya yasho marare bhavam buddhya vatsa padang parang padang 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 yad vipadang natesham. There's danger at every step, but if we take shelter of Krishna, then the great ocean of material existence becomes as easy to cross over as the water in a calf's hoofprint. But still, when you're crossing over the calf's hoofprint, you might slip. So be careful. Always be careful. Thank you very much, Maharaj. Can we have just a few minutes of kirtan, if it's okay with you? Few minutes of kirtan. There's so many good kirtan leaders here. We love your kirtan. Okay, but my voice is really dried up. I can drink water, but then I have to wait an hour to eat, right? Okay, I tell you what, I've been wanting to sing this. I haven't sung it for quite some time. You can all find it on your... This is not going to be 2 minutes now. It's going to get extended. You can all find it on your smartphone. You have a question? Okay. So the song begins, Prabhu Tava Pada Juge. You know this? Do you sing this from time to time? This is Srila Bhaktivinoda Thakur's Bengali verse rendition of the Nadanam Najanam Nasundarim verse with some extra anubhavs and added extra thoughts. Why don't we have a Bengali say? They can sing, it's their language. Prabhu Tava Pada Juge Mora Nivedan. Wait a minute, we're going to put it on the screen. It's already up there. Oh, so quick. Okay, let's start again. I didn't know it was on the screen. All right, you ready, Dotal? Prabhu Tava Pada Juge Mora Nivedan. Nahi magi deho shukha vidadana jan. Nahi magi deha sukha vidyadhana jan. Nahi magi sharga mokha nahi magi Nahi magi swargara mokha nahi ari. Nakori pratana kono vibhutira lagi. Nakari pratana kono vibhutira lagi. Nija karma guna doshe jai jai janma pai. Nija karma guna doshe jai jai janma pai. Janme janme jena tava nama guna gai. Janme janme dehra tava nama guna gai. Hey matra shamama. Hey Matra
ei matra asha amar tomara charane. Sorry, it's my fault. Ei matra asha mama tomara charane. Ahoy tukhi bhakti dibe, ahoy tukhi bhakti hriday jage anukane. Ahoy tukhi bhakti hriday jage anukane. Vishaye jai priti ebe achaye amar. Vishaye jai priti ebe achaye amar. Shimoto priti ho charane tomar. Shimoto priti ho charane tomar. Vipade sampade taha takukshama bhave. Vipade sampade taha takukshama bhave. Dine dine vriddhi hok namera prabhave. Pakhi hoye thaki shage bani roye. Pashu pakhi hoye thaki shage bani roye. Tava bhakti raho bhakti vinoda hridaye. Hey, key boy, Bhakti Giti Sanchaya. No, no, boy. Bhakti Giti Sanchaya. Key boy? Sure. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. There's so much nectar. One book. Hundreds of songs. So I think we should learn one song every week here. Hare Krishna Mahamantra, but one Vaishnava song. So much nectar. But this is from Shikshastakam. All 8 songs are translated by Bhaktivinoda Thakur in Bengali songs. Then we have Radhikashtakam. He has he's given many shlokas from the Yamuna Acharya Stotra Ratna, Yamuna Bhavavali. He's given whole songs for many verses. So much. That's only Bhaktivinoda. We have so many Padakartas. They wrote so many songs. And we have in Sanskrit, and of course Tamil, there must be Telugu, and so many things. So much nectar. All you grihastas, I was saying, you have many children and give 1 or 2 for the Gurukul. We'll train them up from the beginning in all these things. My mother's from Ireland, so the standard thing was to have 9, 10, 11, 12, 13 children, and at least one boy has to be a priest and one girl has to be a nun. So why don't you do that, all you young grihastas? Shataputra bhava. Have 100 children and give me some. Well, give them to some Gurukul where they can be trained.
Don't you regret that it's so many things and you have to spend all your time doing this and that and so many other things, and we've got a lot of important things to do. Many good things. Okay. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Ki Ananda ki jai, Hai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. So we thank Maharaj for being here with us in Damodar Desh after a long time here in the last few days that Maharaj has been taking us through. Maharaj, thank you very much for also guiding. We have so many of your disciples here in Damodar Desh. And also, please do not forget to get, Maharaj has got wonderful books that he's been writing over decades. A book called Aaj Ki Nari Kal Ki Sanskriti, Brahmacharya and Krishna Consciousness, Glimpses of Traditional Indian Life. And that's also available in English, Mothers and Mothers. And My Memories of Srila Prabhupada, Sri Vamshidas Babaji, Jai Srila Prabhupada, Krishna Consciousness, The Beginner's Guide to Krishna Consciousness, Sri Chaitanya Mahaprabhu, on speaking strongly in Srila Prabhupada's service, the story of more and more, the Bhakti Vinod, the Bhakti Siddhanta, Vaibhava. And thank you, Maharaj, for your contributions, and we look forward to continued contribution. Ramayana book as well. And today there are 5 devotees, or yesterday there are 5 devotees who have their names. Thank you, Maharaj, for accepting them as disciples. And Shirish Sadhana Sadhanavadas Sadhanavadas Prabhu. Sadanava means always new. Vibha Mataji Vidarbha Sutta Devidasi. Means? It's female. Okay. Vidarbha Sutta Devidasi. Name for Rukmini. Okay. Mega, child, Mega Mala Devidasi. Rakesh. Name for Yamuna. Megamala. Raga Shakta. Raga Asakta. Raga Asakta. Paritosh. Puranjana Prabhu. Thank you very much. Always, it has to be given out with the proper diatrics for everybody, so we are able to read it properly. Thank you very, very much. And just wanted to also let you know that Maharaj would be here. I think Maharaj leaves day after tomorrow. There are some programs today, and there's some programs planned at our flat 607 also. And thank you, Maharaj. Welcome. Please join us again whenever you're traveling through. And thank you for your blessings here. Also, next week, Sunday, is Narsimha Chaturdashi. Looking forward to seeing all of you week after week here in Damodar Desh. Thank you. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantra Tasya Namanyani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva Tumeva Mata Chapita Tumeva Tumeva Bandhucha Sakat Tumeva Tumeva Vidya Dharnam Tumeva Sarvam Mama Deva Deva Vasudevaya Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chananda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanu Ramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Katyayani Mahamai Mahayogin Nidishwari Nanda Gopasutam Devam Namaha Shri Krishna Sharanam Mama Dasoham Krishna Tavasmi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. Our sponsors are Dinesh Anantaramanji, Nakshatra Nemi Prabhu and Sarva Shweta Madhavi Devidasi Mataji on the occasion of their 25th wedding anniversary. Seek blessings for the entire family. Raga Vora, nephew of Nakshatra Nemi Prabhu, on his birthday. Vijay Kumar,
seeks blessings on birthday. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the sponsors for today's prasadam, please come forward near the altar. Thank you.